Jai Sri Mataji. Today, the second class, we are going to start the second class. The second class is also similar to yesterday's, like revision. Okay. Now I will put on the Tanpura. Tanpura is very important. That will give the pitch by which we have to start. Now today's pitch is only C sharp. Sa. Can you sing with me? Sa. We will sing 4 times each and notes. Sa. 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 The next svar is Re. As I said you, this Re is flat. In Hindi it is called Komal Rishabh, Komal Re. Re. You can sing with me. Ga. 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 Ma. 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 Pa. 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 Da. Dha. 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 Ni. 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 Ni.
सा 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 This is ascending order of Rag Bhairav. In this, Re and Dha are flat. Re and Dha कोमल है. ये राग भैरव है. ये सुबह के वक्त में गाया जाता है. It is sung during the early morning hours. Okay. Now, ascending order को क्या बोलते हैं? आरोह. We say the ascending order आरोह. I hope you are keeping the pencil and pen and notebook. All these things you can write it. The ascending order is called Aroha. That our descending order is called Avaroh. नीचे से जो ऊपर जाता है सारे गा मा पा धा नी सा, इसको बोलते हैं आरोह. सा नी ध प म ग रे सा, ये अवरोह है. अभी आरोह अपन गाए हैं, अभी अवरोह को गाना है. सा 4 times. सा गाइए साथ में. Sing with me. सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा
You have to enjoy each and every second, because music is giving vibrations and it give energy to all the chakras. Like Sa is for Mooladhara, Re for Swadhisthana, Ga for Nabhi, Ma for center heart and all heart parts. Pa is all Vishuddhi, Dha Agnya, Ni Sahasrara, and the Sa is here. In Hindi we can say ऐसा है, हिंदी में सा, इसका नाम है षडज. षडज का मतलब है 6. इसके ऊपर 6 नोट ऐसा कड़ा है. सा के हिसाब से रे गा मा पा धा नी सा ऐसा कड़ा है. इसलिए ये सा है बेस. रे स्वादिष्ठान के लिए रचनात्मक, गा गुरु नाभि, मा मदर जगदम्बा, पा श्री राधा कृष्णा फादर, धा दया, नी श्री माताजी नेम निर्मला देवी, सा is like Sadashiva. We are reaching Sadashiva by, हम सब सदाशिवा के पास जा रहे हैं माध्यम सेंटर नर्वस सिस्टम से. सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा. If you are unable to sing, some ladies cannot sing high notes, no problem. In coming classes, I will be teaching for ladies and gents. But you have to give me, you have to send me your message in my number, India 988 5840 717, 988 5840 717. इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करना है. अकॉर्डिंगली मैं क्लासेस ले लूँगा. If you have any trouble in singing this pitch, you can tell me. I will see to it that every music lovers learn some music, enjoy it. This is music is for enjoyment for us first, because it improves our vibrations. म्यूजिक हमारे लिए है, क्यों बोले तो ये अपना वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करते रहता है. अभी ये हो गया सा. सिंग, वील सिंग 5 times. सा रे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रि सा. ये पूरा notes we will sing for 5 times. We will sing the Arokh and Avarokh 5 times. Sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ma ga re sa, sa re ga ma pa da ni sa, sa ni
dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. Sometimes the voice will go like this. Sa. We have to control it by drinking little water. Sa. So sometimes we have to be very careful. Sa. This is called middle octave. Middle octave, Madhya Saptak. Saptak means 7. Octave means this 8 notes are called octave, 7 notes. This is middle octave. Then from lower than this, that is called Mandra Saptak. That is called Mandra Saptak, lower octave. Sa ni da pa ma. कभी कभी नीचे नहीं जाता, तो कितना दूर जा सकते हैं उतना ही दूर जाना, तकलीफ नहीं लेना. We can't go lower than this. Gents cannot go sometimes lower than this. Then we should stop there only. Then we have to come back and we have to go back like this. Sa ni da pa ma. Ma is not coming, so pa is enough. Pa da ni sa sa ni dha pa pa da ni sa. This is which octave it is called? Lower octave. In Hindi it is called Mandra Saptak. Then we have to go to the Madhya Saptak. Sa re ga ma pa da ni sa. Afterwards it is called Tar Saptak, higher octave. Sa re ga ma ma ga re sa sa ni da pa ma ga re sa sa ni da pa. Now we have to daily sing pada from here to up, then come back to up, like that. So generally the songs will be in this range. Sari gama pa gama gari sa. Up to pa it will go sometimes. Sari gama pa gama gari sa ni da pa ma gama pa da ni sa ni da pa ma pa da ni da pa da ma pa gama re ga ma pa ma gari sa ni da ni re sa.
So it is only now today we are doing some knowledge. For some knowledge, this is the correct one. Okay, now we have to practice. Music is not theory, it is practical. We have to be practical, and daily, how many times we don't know. Till we enjoy, we should practice, because I practice today also, because it is necessary. The voice will get improved, and we have to be steady with that. Okay, shall we sing? Sa ni da pa, then pa da ni sa re ga ma pa da ni sa re ga ma ma ga re sa ni da pa ma ga re sa. Like that we can sing. Sa ni da pa pa da ni sa. Are you enjoying? Yes. Very good. You should appreciate yourself. Then only it will come. Appreciate yourself and enjoy and practice and feel the chakras. What is how much vibration you are getting? How much Sri Mataji is enjoying? Sani. I will tell one story, small story. The music did not come as it is, like that. It was so many years, I think, because Adi Shakti wanted her. She was creating the world, the universe, and she wants some entertainment also, isn't it? So she told Brahma to sing, and he told, I am also creating, so I will teach this to my Shakti, Sri Saraswati. So Saraswati used to play Veena and sing. So Adi Shakti was enjoying the music and creating with the help of Brahmaji, we can say. Then they taught this, Saraswati Ma taught this music to Narad Muni. Narad Muni gave this knowledge to that we can say some divine persons. Then afterwards it came to saints. Then when the saints, they were meditating on Sahasrara, they got this music. First it was only 3 notes. Sa re sa re sa sa re re sa re re sa re sa, like that it was. Then they found out 5 notes, then they found out 12 notes, that's all. And music means 3 arts together, because each singing, playing some instrument and dancing. This dancing also coming inside the music only. That is why in Hindi we called it Sangeet. Geet means song. If you want to sing, you have to have a song. If you want to play some instrument, you have to have a song. If you want to dance somewhere, you need a song, so that you can give that expression. So expression is also important. Like sometimes it is about nature, sometimes it will be very happy song, sometimes it will be sad song. Like that, expression is also necessary. So music is 3 arts together: singing, playing some instrument and dancing. See, now I cannot sing Bor bhai ab dhyan dharo, like that. There is no expression in that. Now if I say Bor bhai ab dhyan dharo, some action will be there, but the dancers will make the action bigger. Now we do
singing bigger, dancers will do the actions bigger. Okay, now what I want to do is say, so we will practice only 5 times. All mantras tar madhya saptak. Sa, we'll start with sa, nidapa, padani sarigama, magari sanida. Sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, ni, da, pa, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, re, ga, ma, ga, re,
ga re sa ni da pa. After practicing this, you may get a note below this also. Ma ga. Ga is not coming, so we should leave it. Shall we go to the song? Yesterday's song. That is actually classical song. Any song, the first paragraph is called Sthayi. Sthayi means the best portion. Like in our body, the best portion is head. We'll use all the hands and all, but every time the head is so important. Like that, the Sthayi, the first paragraph is so important for the whole song. First paragraph we'll sing, then we'll sing the second paragraph, then third, or if it is there, third, fourth, fifth, then the middle will be going on coming to the first part. Come on, say. Don't think, just repeat it. In Sahaja Yoga, in music, everything is done by Nirvichara only. Music. If you say whether I can sing, oh, you cannot sing. Come on, sing. भोर भई अब ध्यान धरो, 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 भोर भई अब ध्यान धरो. As I said, bhor means early morning, pratah kal. We have to meditate. भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो. Sing. भोर अब ध्यान धरो, निर्मल माँ के निर्मल माँ के
चरण कमल को चरण कमल को निर्मल माके चरण कमल को निर्मल माके निर्मल माके चरण कमल को निर्मल मा निर्मल we have to come little low निर्मल माके very good निर्मल माके चरण कमल को चरण कमल को निर्मल माके चरण कमल को निर्मल माके चरण कमल को जीवन अपना धन्य करो धन्य करो जीवन अपना धन्य करो जीवन अपना धन्य करो जीवन अपना धन्य करो भोर भई अब ध्यान धरो. Okay, now we will sing every line 2 times. When the first line 4 times, then second line 2 times, third line 2 times. The third line, the second, when you sing for the second time, it will have a little change, so that we can go to the first line very easily. Bho 4 times. भोर भई अब ध्यान धरो 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 निर्मल माके चरण कमल को निर्मल माके चरण कमल को जीवन अपना धन्य करो जीवन अपना धन्य करो भोर भई अब ध्यान धरो भोर भई अब ध्यान धरो. How you are enjoying? Is it okay? You will be enjoying. Yes. The meaning is, it is become early morning, get up and sit for meditation, go into meditation. Meditate upon Sri Mataji Nirmala Devi's lotus feet and make this life very useful. Otherwise it will become a waste. The next paragraph, it is called Antara. Antara means second paragraph.
करुणा बरसे, करुणा बरसे माँ के नयनों से. We can, Sri Mataji is with full of compassion, she is seeing us. With full compassion is flowing from her eyes. करुणा बरसे. हिंदी वालों को तो मालूम हो जाता है क्या है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना व्हाट्सएप में. ये मेरा ख्याल से ये वीडियो हमेशा रहता है फेसबुक में, आप जब भी चाहे वो देख के अपना प्रैक्टिस हो सकता है, कर सकते हैं. करुणा बरसे, सिंगिए. करुणा बरसे, करुणा बरसे माँ के नयनों से. माँ के नयनों से माँ के नयनों से करुणा बरसे. माँ के नयनों से करुणा बरसे. माँ के नयनों से करुणा बरसे. माँ के नयनों से. After 2 times we can change that. Instead of माँ के नयनों से we can say कमल नयनों से, from her lotus eyes. Okay. करुणा बरसे कमल नयनों से. करुणा बरसे कमल नयनों से. Now we will sing 2 times माँ के नयनों से, 2 times कमल नयनों से. करुणा बरसे माँ के नयनों से. करुणा बरसे माँ के नयनों से. करुणा बरसे कमल नयनों से. करुणा बरसे कमल नयनों से. नेक्स्ट लाइन इज आशीष बरसे कर कमलों से. ब्लेसिंग्स flowing from her lotus hand. आशीष बरसे कर कमलों से. Did you write the song? Hope you will write it. If you don't write it also, you can see the Facebook and listen and write. आशीष बरसे आशीष बरसे. 1 second. आशीष बरसे कर कमलों से. इसको ऊपर लेके जाना है अभी. कैसा? कर कमलों से करुणा, लाइक दैट. करुणा बरसे माँ के नयनों से. करुणा बरसे माँ के नयनों से. आशीष बरसे कर कमलों से. करुणा बरसे माँ के नयनों से. आशीष बरसे कर
कर कमलों से। ये सब बाद में आएगा, प्रैक्टिस में आता है। पदम अपमग, इतना अपन जब अलंकार कंप्लीट करेंगे ना, तब आपका वॉइस भी गाने के लिए तैयार हो जाता। अभी भी आ गया होगा, किसी को आता है अपने आप। कर कमलों से, अभी पहले वाला कर कमलों से बोले तो फर्स्ट लाइन को जाना है। अभी कर कमलों से, अभी क्या होता है, नेक्स्ट लाइन को जाना रहता। चैतन्य कर कमलों से, चैतन्य बरसे, चैतन्य बरसे, चैतन्य बरसे चरण कमलों से, चरण कमलों से। सिंपल, चरण कमलों से चैतन्य बरसे, चरण कमलों से भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। करुणा बरसे माँ के नयनों से, करुणा बरसे माँ के नयनों से, करुणा बरसे कमल नयनों से, करुणा बरसे कमल नयनों से। आशीष बरसे कर कमलों से, करुणा बरसे माँ के नयनों से। आशीष बरसे कर कमलों से, चैतन्य बरसे, चैतन्य बरसे चरण कमलों से, चैतन्य बरसे चरण कमलों से। भोर भई अब ध्यान धरो। Now I will sing with the tabla machine, tabla. Dha din din da, dha din din da, dha tin tin ta, dha din, dha din din da, dha din। भोर भई, थोड़ा फास्ट हो गया। धा दिन दिन दा, धा दिन। भोर भई अब ध्यान धरो। अभी फास्ट। भोर भई अब ध्यान धरो। 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 निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल माँ के चरण कमल को
जीवन अपना धन्य करो, जीवन अपना धन्य करो। भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल माँ के चरण कमल को, जीवन अपना धन्य करो, जीवन अपना धन्य करो। भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। करुणा बरसे माँ के नयनों से, करुणा बरसे माँ के नयनों से, करुणा बरसे कमल नयनों से, करुणा बरसे कमल नयनों से। आशीष बरसे कर कमलों से, करुणा बरसे माँ के नयनों से। आशीष बरसे कर कमलों से, चैतन्य बरसे, चैतन्य बरसे चरण कमलों से, चैतन्य बरसे चरण कमलों से। भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल माँ के चरण कमल को, जीवन अपना धन्य करो, जीवन अपना धन्य करो। भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। भोर भई अब, भोर भई अब, भोर भई अब ध्यान धरो। इस गाने को श्री माता जी की कृपा से मैं वैतरणा में लिखा। इसका एक कहानी है। देर इज ए स्टोरी अबाउट दिस। व्हेन आई वाज इन वैतरणा आई रोट दिस सॉन्ग। I will say both in Hindi and English. एक दिन क्या हुआ, जनरली आई यूज्ड टू, मैं रोज मैं क्या बोलता था स्टूडेंट्स को, 4 बजे आना है मेडिटेशन के लिए। सब लोग आएंगे बट मुझे तो जाना है ना 4 बजे करेक्ट। वो बच्चे लोग आने के पहले मैं जाना है, इसलिए मैं रोज जाता था। श्री माता जी के ऑल्टर क्लीन करके प्रदक्षिणा लगा के बैठ जाता था। You know, I told all the students to come at 4 o'clock for the meditation, early morning meditation. But you know, I have to be there because I have told them to come. If I don't be there, it won't be nice. So I used to go daily, and I will clean the altar, and all the students will come. We will meditate 1 hour
and we listen to Sri Mataji's speech, and the days will come up. One day what happened, एक दिन क्या हुआ, मुझे नींद तो खुल गई, बट नीचे जाने के लिए मन नहीं लग रहा था. मैं माता जी का फ़ोटो देख रहा था. माता जी का जो ऑल्टर में से हाथ ऐसा ब्लेसिंग्स देते हुए है. तो मैं देखा, श्री माता जी मैं और थोड़ा सो जाऊँ क्या बोले थे. हाँ, श्री माता जी तो बोलते ओके. तो मैं थोड़ा ऐसा सो रहा था, क्योंकि मुझे ठंड काल है, दिसंबर. तो ऐसा देख रहा था, वहाँ से श्री माता जी के हाथ से ऐसा एक ट्यूबलाइट जैसा मेरे ऊपर किरण आ रहा था. तो मैं सोचा ये क्या है, ये तो श्री माता जी की आशीष, वो आई शुड गेट अप बोल के मैं नीचे आ गया. उस दिन मेडिटेशन हो गया. वन डे व्हाट हैपेंड, आई वाज अबाउट टू go down, but I got up at 4 o'clock, before 4 o'clock. Then I want to sleep more. Then I asked Mataji in the photograph in my room. Then she said, okay, sleep. Because I am a child, no, for her. Then, but I have got up and I saw the photograph. Then there was a blessing, means one ray coming on me like that, as a tube light, tang, it is coming like light. So it is Sri Mataji's blessings. So I got up and came down. Then I was sitting. Then I got the song, this song, भोर भई अब ध्यान धरो. कितना बड़ी बात है. ऐसा श्री माता जी का ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे पास अपने ऊपर है, सब लोगों के पास है. तो हम सब क्या करना, श्री माता जी को खुश करने के लिए. श्री माता जी एक स्पीच में बताए हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आप लोग सुनना है, सीखना है. बट क्लासिकल म्यूज़िक बंदिश अलग अलग है, बहुत से घराना है, सब कुछ है. श्री माता जी की कृपा से मैं बोल के नहीं बोल सकता, बट उनका इंस्ट्रूमेंट मैं हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट है. तो मुझसे ही बहुत से बंदिश लिखवाए थे माता जी ने. एक किताब जैसा बन गया. तो मैं किताब बेचने का बोल रहा नहीं, बेचने का. आई वॉन्ट टू टीच दम सम, कितना हो सके अपन लर्न करेंगे. बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री माता जी, देर आर सो मेनी क्लासिकल बंदिश. Sri Mataji likes classical music very much. So I thought I want to be an instrument to write Sahaja Yoga songs in classical music, like Bhor Bhai Ab Dhyana Dharo. Like that, there are so many ragas in Yaman, in Ahir Bhairav, in Vachaspati, in Kalavati, in so many songs are there. So we will learn it, enjoy it in due course. I hope you all enjoy this, and we will meet on which day? Maybe Thursday. Okay? Not Thursday is too far, no? So we will meet on Tuesday. Tuesday, morning 8 a.m. My phone number is 98858401717. This video is available in Facebook also, I think so. Jai Sri Mataji for the class. Jai Sri Mataji.